साल का शुरू जो हुआ था बड़ी अच्छी खबर आई थी कि नूरी इज़ कमिंग बैक. अनफॉर्चुनेटली देयर वाज लाइक एन इंसिडेंट. हम औरतों की बातें तो बहुत कर रहे हैं मगर मर्दों के साथ क्या हो रहा है सारी सिचुएशन में. जब ये नूरी के साथ हुआ ना, जब नूरी के आने के बाद ये दोबारा स्टोरी निकली, फिर मुझे लगा दाल में कुछ काला है. I think this whole Me Too thing is a very sensitive thing. Unfortunately, there are certain people who are not just simplifying it but misusing it. So being the wife, you know, how did you deal with this difficult time? My problem is when somebody is trying to negate my presence in front of him and or me, I'm very quick catching that. Hamza, this person is a no-go area, ठीक है? Stay away from her, okay? भाई मुझसे बड़ी रॉकस्टार ये हैं. फिर हमजा अपने कमरे में बंद हो जाएगा. Then he'll be like मैंने किसी को मिलना नहीं है. अच्छा, I don't want to like socialize right now. I'm just in that another zone, and I'm like I'm used to it now. Hamza! प्यार की पलकों मेरी जान. How did it all gel well together? Cut the cord and move on and live life. हाँ जी जनाब, क्या चल रहा है ज़िंदगी में? Seeing you guys after नहीं मुलाकात तो वैसे होती रहती है every now and then. But how has it been? क्या चल रहा है ज़िंदगी में? बताइए आप क्या चल रहा है. मैं तो बंद रहता हूँ. मैं तो मेरी जिंदगी हमेशा एक ही. मैं घर में हूँ. Ideal man. होते हैं यार. Yeah, it really helps actually. It really helps him in being in the house. बच्चों के साथ भी काफ़ी हेल्प हो जाती है और बाकी चीज़ों में बहुत हेल्प ले रहती है. अल्लाह का शुक्र है. But yeah, it's good to have him in the house. A lot of people say तुम like you know he's always in the house. How do you manage? And I'm like, that's what I know. That's all I know, and I enjoy it. I enjoy it. I think that's amazing. I enjoy it. He's in the house most of the time. Yeah, we do things together, and I enjoy it. Yeah. All right. Yeah. Okay, so like let it make it known that this is not the first time that we are meeting. We have worked together. Yes. और जो मेरा बहुत ही memorable experience था, it was the hello shoot that we did together. Yes. And मुझे इस तरह से like Ali Hamza, of course, I mean I've been a big fan of him. And then मेरा अच्छा लगा मुझे shoot पे कि मेरी आपसे मुलाकात हुई. Because you know Hamza, when I contacted you for that project, you know, तो the point of contact was Nafisa. Yes. And मुझे बात करके realize हुआ, oh my God, she is the wife. And I was like, and I was so moved by the fact that she was also managing you at the time. And जो आपकी जो shoot पे जो एक कमाल की जो chemistry थी, you know, I've seen couples and all, लेकिन जिस तरह से, you know, you guys were like out there, you were there for him and you were there for her. तो वो बड़ा मुझे ना because मेरी शादी में होने वाली है, तो that was a very touching, you know, we're looking forward to, you know, like अच्छा ऐसा भी होता है यार. So मुझे बताएं कि how long has it been? How long have you been married for? आप बताएंगे? मैं 13 years. That's 13 साल हो गए. 13 साल हो गए. टीनेजर हो गई हमारी शादी. I know. Teenager हुई थी. Teenager literally पूरे अब 13 साल पूरे हो गए. We step in our teens, dangerous है. हाँ. So क्या story है? मुझे ये तो पता है कि that you were introduced by a friend and it happened at a wedding or so. I mean this is something that you वैसे मुझे ऐसे आपने बताया था मुझे उस दिन ना कि वो हमारी शादी मुलाकात हुई थी. तो क्या story है वैसे? हमारी luck by chance की शादी थी. Luck by chance. Luck by chance. और जब हमने शादी के बाद पहली मूवी देखी उसका नाम भी Luck by Chance. Luck by Chance. That's actually. Yeah, we went to the cinema. यार आप बड़े फिल्मी हो यार, बड़े फिल्मी हो तुम, बड़े फिल्मी. हमारी शादी भी काफी फिल्मी है, to be honest. फूल बनते ना उतने ही फिल्मी है. हाँ, dramatic. बनने की जरूरत नहीं, वैसे भी you are a very cool couple. Thank you. So what's the story? I want to hear your side, and because there are always two sides, I want to hear Nafisa speak first. Me speak first. I was really hoping you speak. अच्छा चलिए Hamza, you can go ahead. So, to be honest, Hamza was nothing like the man that I had envisioned. To be honest, I wanted a very, मुझे बड़ा suited, booted, clean shave. मुझे like I wanted a very prim, proper man, and was so not Hamza. Because जब मैं Hamza को मिली तो Hamza told me कि मेरी शादी पे, हमारी शादी पे, that was the third or the fourth time that you wore a suit. So like completely anti हो गया. Yeah. But then, what do you call it? But when we met, it was just, we just got along and we kept on talking and we kept on talking. And there was this man, चश्मे पहने हुए थे ऐसे, और ऐसे चश्मे पहने हुए बिल्कुल वो नर्ड्स वाले चश्मे होते वो वाले, और ऐसे बाल ऐसे आगे ऐसे बिल्कुल मतलब अंदर हमजा नहीं नजर आ रहा, लेकिन सिर्फ एक आवाज़ जो है ना, बस वो आवाज़ का भार है ना वो. Then we started talking and वो बात करते करते इतनी लेट हो गया. It turned out 3 hours and we were talking like it was a dinner.
हमारे फ्रेंड ने अपना एंगेजमेंट डिनर किया हुआ था, वी मेट देयर एंड वी जस्ट गॉट अलोंग एंड वी रियलाइज्ड यार कि काफ़ी केमिस्ट्री है यार। रोमांटिक आदमी हूँ तो मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि बस हमारी आंखें मिली और फिर हम देखते रहे, लाइक आई कुड सी, आंखें नजर नहीं आ रही थी चश्मों के पीछे। हमारी जब बातें हो रही थी तो हमारी आंखों से और बातें होना शुरू हो गई थी, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मुश्किलात तो हर बंदे की ज़िंदगी में आते हैं, कभी एक्सटर्नल फैक्टर से आते हैं, कभी आपके खुद आते हैं, बट आई जस्ट जनरली फील दैट मैरिज इज़ अ बैलेंसिंग एक्ट। इफ़ यू एक्चुअली मास्टर द एक्ट ऑफ बैलेंसिंग, यू आर गुड टू गो। आपने मुझे एक इंटरव्यू में एक बार कहा था दैट यू वांटेड टू बी अ मैथमेटिशियन। यस। और ये फिर बन गए सिंगर आप यार, और वो भी सिंगर के बारे में यू वर सेड दैट यू वर वेरी अनश्योर कि इवन व्हेन यू वर इन इट यू वर लाइक यार डू आई रियली वांट टू डू दिस प्रोफेशनली, लाइक यू आई रिमेंबर यू कोटेड दैट। तो मुझे जब आप मिले थे तो वर यू अ सिंगर, यू वर नॉट रियली इनटू इट, लाइक आप इस वक्त आप सिंगर नहीं बनने थे? मुझे जरा उसका बताएं बिकॉज़ उसकी मुझे कोई रिकलेक्शन 2008 में। ठीक है। So this was the time when actually the second season of Coke Studio was coming out. Okay. So I was like full time back into Okay. it. There was a time just before that when I had kind of taken a really seriously. Yeah, I ran away from home and I said कि अच्छा भैया मुझे सोचना है अपनी जिंदगी के बारे में। तो वो वाला ran away from home, हाय ऐसे मेटाफोरिकली बोल रहे हैं, बाकी भागे थे। 26 साल की उम्र में बंदा ये कर। Oh God. I saw a good soul. I felt कि ज़िंदगी में बाकी चीज़ों के साथ तो आप कुछ भी कर ले वो इन एंड आउट होता रहता है, और यू नो हर चीज़ फेज आउट कर जाती है, लेकिन अगर सोल अच्छी हो तो गुजारा अच्छा चल जाता है ज़िंदगी में। So you were a singer. मेरे हाथ नरम थे। हाथ नरम थे। तो मैंने हाथ मिलाए तो मुझे इतना सुकून मिला दूसरे हाथ मिला के बस फिर मुझे तलियां बहुत सॉफ्ट है, वाकई तलियां बहुत सॉफ्ट है और बहुत वार्म है, and I just shook hands. I was literally like this. So हर एक आर्टिस्ट के phases होते हैं, especially from the point that he starts from. Phases तो बहुत होते हैं कि 2 मेजर phases होते हैं, जब वो बिल्कुल स्टार्टिंग स्ट्रगलिंग फेज में होता है और जब वो कुछ बन चुका होता है, ठीक है? तो being the wife, how did you deal with his difficult time? Because I'm sure कि मतलब बहुत बुरे वक्त भी आए होंगे, बहुत अच्छे वक्त भी आए होंगे, तो how do you get to embrace all the frustrations and joys of his career, and how can you how did it all gel well together? To be honest, initially, though it was I was like, what is happening? The first 1 year, 1.5 year was crazy because it hit me like a truck. Because I was like, you're talking about the bad part, the rocky part, the lifestyles, the change of lifestyles. I mean, the way he was living life and his ups and his downs were very different to what we like a typical person would experience as compared to an artist. So Hamza, I feel मैं हमेशा ऐसे कहती हूँ कि तुम्हारे जो लाइफ तुम्हारे मूड्स है ना वो सिनुसॉइडल वेव की तरह है, वो ऐसे है। आर्टिस्ट का रेगुलरली इस तरह चलता रहता है, एंड यू गॉट लाइक एज अ पार्टनर यू गॉट बी ऑन बोर्ड विद द गेम के ये वो अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे। सो कभी इसका मूड अच्छा हो जाता है एंड देन आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि 2 महीने में इट कैन गो डाउन, एंड देन वो क्वाइट हो जाए, फिर हमजा अपने कमरे में बंद हो जाएगा, देन he'll be like मैंने किसी को मिलना नहीं है, अच्छा I don't want to like socialize right now, I'm just in that another zone, and I'm like I'm used to it now. So I know कि अब this is his time, he's gone in that वो shell और अब वो bubble में चला गया, अब मैं अपनी लाइफ फिर जीती हूँ. So initially I would be like okay, I would wait for him to come out. Now I'm waiting, but I'm living my own life. साथ I'm like ठीक है, I'll wait for you, I'm right here and we're together, but I hope you get out of it quickly and then we can enjoy the finer things in life together. Back then मुझे याद है कि Cornetto वाला आया था जैम आपका, बनवा पुकारे and something like this, was a Cornetto mashup I remember, and I had a very very big crush on you at that time, तो उससे मैं रिलेट करूँ, चले मेरा तो ऐसे फजूल क्रश था. There are a lot of people who have big crushers. So how do you deal with all the female fan buzzing, वहाँ पर उसको ये सुकून है कि मैं घर पे होता हूँ most of the time. हाँ एक चीज़ ये कि you know your man. You know your man. I mean, there are certain women who are in denial. Yeah. They think they know their man, but they don't. I'd like to have that thing that I know my man and I know okay, these are the boundaries that Hamza understands that we've set in the marriage, and he will not cross them, nor will I. And we respect that, and that's how we coexist, because then he can go wherever he wants to go and I can do whatever my thing is, because
हम हर चीज़ तो इकट्ठे नहीं कर सकते, हर चीज़ अलग अलग भी करनी है, एंड आई वॉन्ट हिम टू बी ऑन हिज ओन एंड एवरीथिंग। एक वो चीज़ है। दूसरी बात ये है कि आई एम जस्ट जनरली नॉट एन इनसिक्योर वुमन। आई एम नॉट, आई मीन इफ़ यूर जनरली, मैंने वो कहते हैं ना कि मेरे दादा कहते थे कि फितरतुल मौत एक चीज़ है, वो जस्ट स्लाइटली सीरियस, बट वो कहते थे कि इंसान की फितरत जो है ना वो कभी बदलती नहीं है। सो आई मीन That's actually a very scary thing also, and a very, what you call, something to ponder about. I mean literally मैं तो कहती हूँ मैरिज में अगर कोई भी चलता है तो प्लीज़ ये चीज़ आप सोच लें कि फितरतुल मौत पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट। दिस इज़ अ टिप दैट माय ग्रैंडफादर गेव मी व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप। ही सेड बच्चे जब भी ज़िंदगी में कोई भी इंसान को देखो तो वो फितरत ज़रूर देखना कि वो ऐसी चीज़ है जो बदलती नहीं है ज़िंदगी में। सो आई फेल्ट लाइक एज अ पर्सन, आई नो हमजा इज नॉट अ पर्सन who would swing or slide easily, and I'm not an insecure person, so it makes the perfect combo, and we enjoy things together. He gets the attention, I enjoy it. I love the fact that भाई मुझसे बड़ी रॉकस्टार ये हैं। नो वो तो मैंने देखा है हमजा, वो तो मैंने देखा है। इनफैक्ट यही बात थी कि मैं while I'm a very lucky man, I think in all aspects of my life I've been very lucky, including my career and my profession. Mashallah. As I said, I didn't even choose it. It just came to me. Yeah, he's a lucky man, I feel. Yeah. It just happened like that. लेकिन जैसे आपने इनसिक्योरिटी की बात की, स्पेशली इफ यू लुकिंग एट मॉडर्न कपल्स, आई थिंक इट्स आल्सो नेचुरल इन अ वे, लाइक इनहेरेंटली औरतों में और मर्दों में भी होती है। तो हाउ डज वन डील विद दैट? मेरे ख्याल से मर्द ज़्यादा इनसिक्योर हो ज़्यादा इनसिक्योर। हाँ, ये भी बहुत इनसिक्योर होता है कभी कभार। आई मीन आई बी ऑनेस्ट, ये भी इनसिक्योर होता है, एंड देन आई एम लाइक हमजा प्लीज यार क्या बातें कर रहे हो यार, कौन सी दुनिया में है। बट एनीवेज हाउ डू आई डील विद इट? हाँ देखो, एंड व्हेन यू आर अ वाइफ ना, यू नो कि आपको समझ आती है कुछ चल रहा है ना, तो यू वुड अंडरस्टैंड कि कौन लाइक एक वो आप you can identify that this is the danger zone. This is the danger zone. And I just quickly go to Hamza and I was like, Hamza, this person is a no-go area. ठीक है, stay away from her, okay? That's fine. Let's enjoy the party. So you just identify. कोई भी होता है, rarely मुझे literally कोई ज़िंदगी में कोई ऐसा हुआ है, but obviously we've had like 1 or 2 incidents where I've just generally not liked a certain person, and that person is a huge fan of this person also, and I'm like, okay, that's it, हमजा ये हो गया ना, अब ये बार हो जाता है कभी, आप ऐसे एनकाउंटर हो जाए and you are like, okay, but I'm very clear, then I get up and I'm like, listen, ये ज़रा आप, हाँ ये मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही, इसकी मुझे एनर्जी वाइब नहीं पसंद, ये बहुत क्लोज हो रही है, और मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे क्लोज का भी इतना प्रॉब्लम नहीं है। आई एम नॉट अ पर्सन के हाय ये तुम्हारे साथ खड़ी क्यों हुई और इसने ऐसे ना। My problem is when somebody is trying to negate my presence in front of him and try, or me, I'm very quick catching that. I'm like, I'm sorry. So that word to negate my presence, that's really strong, and that kind of sums it all up. Yeah. Right? Yeah. I mean, and this is, I mean, you're getting married, and I mean, anyone who negates your presence as his wife in front of your husband and you, and while you're there, even otherwise, is a no-go area. You are, that's कोई भी हो सकता है यार, वो man, कोई बंदा भी हो सकता है, by the way. It's necessarily, it does not have to be a man. It can be a woman, or it can be like a woman नहीं, man भी हो सकता है. Just that, cut the cord. Cut the cord. And move on. And live life. साल का शुरू जो हुआ था, बड़ी अच्छी खबर आई थी कि Noori is coming back, and I remember I myself did a web story on it. I was like, yay, Noori is back and all, you know. And but unfortunately there was like an incident that really kind of like I'm not sure if you're cool talking about it, you know, and I'm sure it must have affected you as a family. And मतलब I believe कि अगर bandmate, मुझे याद है जैसे मैंने I have interviewed people as well, and मतलब you know they say कि bandmates में कोई भी होता है तो हमें लगता है हम मुतासिर हो रहे हैं. What happens if the bandmate is a brother? So how has this impacted you, and how, like, you don't even have to give an official thing, but you can just talk about कि how did it impact you and what are your feelings about it? मुझे पर्सनली मतलब मी बीइंग अली हमजा, मैं मशहूर होता जा रहा हूँ लोगों की नज़रों में कि यार ये बंदा रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करता है। आई हैव बीन थ्रू डेथ्स इन द फैमिली, आई हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमास अराउंड माई लाइफ। उस टाइम पे आई थिंक मैं इतना ज़्यादा इमोशनली रिस्पॉन्ड नहीं करता, मगर आई थिंक ऑल दैट आई हैव सीन हैपन ओवर दीज लास्ट 2-3 years in Noori's life, they have made me realize that, you know, because I've been away from Lahore, because I've been away from my
parents, my brother, and everyone, I realized that I've not been able to see or experience the pain that Noor has been going through for quite some time. And there was a moment where it really culminated. That was about 2 years back. At the same time, my grandmother also passed away. Bad timing. So yeah, from there that story began. And जब ये नूरी के साथ हुआ ना, जब नूरी के आने के बाद ये दोबारा स्टोरी निकली, फिर मुझे लगा दाल में कुछ काला है. I'll be very honest, and that's where I realized that there is what I have to say about, and that's an opinion I have, and it's slightly becoming stronger, is I think this whole Me Too thing is a very sensitive thing, and I'm so at the end of the day I'm very glad that it has happened. Over years it has picked up, because I think this is something that is very much needed to get into discourse in society. I think it's a very deep issue. I don't think it can be very, I think it's being a bit simplified now. And it's being simplified, and unfortunately there are certain people who are not just simplifying it but misusing it. So certain cases are for sure cases of misuse of something like this. हमारे मुल्क में tendency है, there's a lot of spaces where a lynch mob mentality comes into play, and certain people then start seeking opportunity to kind of use that situation to I don't know, sometimes for vendetta, sometimes for maybe, you know, it's like politics में भी होता है कि जब आपको narrative को push करना होता है, then you can go all dirty with how you want to push that narrative. So हाँ, कुछ ज़रा उसामा बिन लादेन टाइप वाइब्स आना शुरू हो गई मुझे इस Me Too मूवमेंट से, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही हमारे पास एक इंटेलेक्चुअल डर्थ है इस मुल्क के अंदर, वी सफ़र फ्रॉम, वरना कहीं और होते हैं एज अ कंट्री, हम एज अ नेशन कहीं और. तो ऐसे यहाँ पे जिस तरह की सोच चलती है, वहाँ पे इट्स प्रीटी एक्सपेक्टेड दैट सर्टेन थिंग्स लाइक दीस वुड हैपन, एंड हेंस यू नो वी कॉन्शियसली टुक अ डिसीजन कि यार हम ज़रा नूरी को, एक दो वजह थी नूरी को, अभी हमने थोड़ा सा ज़रा पॉज दिया है खुद से भी. हम अपना गाना निकालने चाह रहे हैं, वी वांट टू क्रिएट न्यू म्यूजिक. आई थिंक दैट्स, वी जस्ट गॉट इनटू गिगिंग एंड परफॉर्मिंग, एंड फाइंड दैट इज लाइक अ ग्रेट feel-good experience for so many people who have been our fans. The Nisha Shaki case, you know, so it's very unfortunate that also occurred in the showbiz industry. So it's easy for it to happen in the showbiz industry, yeah, because these are you know, people of influence. And bro, you know, you're running a PR company. You know how today any news, any media is looked in terms of numbers, and then it can be monetized. It's a business plan also. Let's not just like, you know, and give. वही बात है, सैड बात है कि हमारे मुल्क के अंदर लोगों की सोचें, बाहर दुनिया में भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नेक्स्ट लेवल ही जब जाना होता है, कुछ भी लेके जाना होता है. नहीं, वो कहते हैं ना, मार्केटिंग में there's no such thing as bad publicity. That's fine, but there's, you know, because उसमें, and exactly my point. There's an aesthetic. Exactly my point. People are using it for bad, like. And there is a, मतलब खैर, it's a. हम औरतों की बातें तो बहुत कर रहे हैं, मगर मर्दों के साथ क्या हो रहा है सारी सिचुएशन, तो वो भी तो बात करनी पड़ेगी. तो ये ज़रा आगे बढ़ रही है आपसे, ठीक है, एक हिस्ट्री में दिखाया है कि एक वैसी लॉपसाइडेड जर्नी रही है मर्द औरत के दरमियान, बट उसको करेक्ट करने के लिए वही फ्लिप दोबारा से चलेगा, वही तरीके इस्तेमाल होंगे, वो तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं, फिर तो ये ऐसे ही चलता रहेगा. Okay, so coming from mashallah 13 years of marriage, why do you think it happens, particularly in the showbiz industry, कि शादियाँ नहीं चल पाती या कुछ होता है? वैसे तो मुझे लगता है आम तौर से भी कभी it's very common, it's fairly very common, लेकिन showbiz ज़्यादा highlight हो जाता है because you know it is showbiz, you know it is. Yeah. You gonna go first or I'm gonna go first? Because we might have totally different point of views here. I would like to see like a variety of opinions here, you know. Okay, so मैं हमेशा हमला से कहती हूँ, because obviously there are couples, and I mean you're in the industry. I see all these couples like day in and day out. I see them mingling, and I see them in and like outside. आप कहीं मिलते हैं. अली हमजा की सबसे annoying habit क्या लगती है आपको?
सबसे अनोइंग हैबिट हमजा की है कि जब मैं हमजा को आवाज़ मारती हूँ, हाँ। इसको मेरी आवाज़ नहीं आती। आती फ़ोन होगी पे लगा हमजा? होगा, गेम ही खेल रहा होगा, मैं कहूँगी हमजा हमजा हमजा, और मैं 3 दफ़ा हमजा बोलूँगी तरीके से, टोन में, लेकिन नहीं, हमजा को आवाज़ नहीं, हमजा, और फिर हमजा की कहा हाँ नफीसा, हाँ नफीसा। that is one Maybe of the, he's waiting for that one shouting. and he goes तुम आहिस्ता क्यों नहीं बोलती, आदत पड़ गई। आराम आदत हो से क्यों गई नहीं है। बोलती? मैं कहा जब मैं तुमसे आराम से तुम्हें जवाब देती हूँ, तुम 3 दफ़ा मुझे जवाब नहीं देते हो। जब मैं हमजू कहती हूँ ना वो उस टोन में, तब तुम्हें जवाब होता है। एंड इट्स जब आपने दिन में 4 दफ़ा बुलाना है, 5 दफ़ा, कभी 8 दफ़ा बुलाना है, It's और वो kinda 3 दफ़ा annoying. रिपीट करना है, यूर लाइक बाय द एंड ऑफ द डे यूर लाइक ओफ अल्लाह यार सुन लेता यार थोड़ा सा। अब मुझे बताएं नफीसा की सबसे annoying habit क्या है? She got her turn. वक्त की बिल्कुल पाबंदी नहीं करती, मतलब वक्त इसने बनाया है मुझे लगता है। हाँ, yeah, I Nafisa. agree. This is a very time management बहुत ख़राब है। She's juggling so much. I was speaking in her defense Time. because you know I've seen her juggle so much It's with kids and house and all. I mean, So there are a lot of people I know who juggle a lot more and they're still on time. So I don't think. I wish I could be. I And they're mean, women, not just men. yeah, I wish I could work on it. I mean, मैंने अपने दोस्त को प्रॉमिस किया है, अली हमारा दोस्त है, उसको मैंने प्रॉमिस किया है कि इस साल के एंड में I'm gonna really gonna work on it. Like Work on it. साल के एंड में नहीं, अभी try से to वर्क करना conquer शुरू it. कर देना। साल के एंड में क्यों कर रही है? अभी अच्छा से कर मेरा रही है। असल में मेरा उल्टा है। अच्छा। मेरा ये तो 5 मिनट पहले वाला माइंडसेट था। तो Like initially हम जब मिले थे, but खैर there are a few things I learned from her. जैसे एयरपोर्ट 1.5 घंटे पहले पहुंचने की जरूरत नहीं है। You can do that 45 minutes before, not 30. Has she made you miss any flights or have you missed any Yes. flights? yes, Many? yeah. So we We were in India. we were in Good. India. We were in India. And we had to cross the border. The visa was expiring and we had to walk across the border that very day. So we were flying from Delhi to Amritsar. और इनको कहा कि मुझे मैकडोनल्ड्स खाना है। मुझे भूख लग रही थी। रच के भूख लग रही है। वो इतना बड़ा एयरपोर्ट दिल्ली का हम लोगों को पता नहीं था इतना बड़ा। हमने बोर्डिंग कार्ड ले लिया था और मुझे भूख लग रही थी। हम खाने की लाइन में लगे हुए। जब हम वहाँ पहुँचे तो गेट बंद। जहाज उड़ चुका था। और फिर जो हमारा फटा हुआ। ओए। फिर हमने एक और फ्लाइट ली। बिल्कुल बॉर्डर पे कुछ 3:30 बजे बॉर्डर बंद होता है। 3:40 पे हम पहुँचे और बड़ी मेहनत करके हमने बॉर्डर क्रॉस किया। अच्छा, speaking of fights, like what's the best and tried and tested way to end a couple's fight? Like how do you guys, like किस तरह कोई अगर कोई बड़ा फड्डा हो जाता है तो किस तरह से जवाब ना दे? ना दो। अच्छा जी। That's the only way to end. हमारे दोस्त One कहते person has to shut up. yeah, Basically. ये मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। बिल्कुल agree करती हूँ इस बात से। disengage is a word that our friend Ali has taught us. तो वो कहते हैं disengage के just don't take it too personally. Everything you cannot take personally. वरना फिर तो हर choose your battles. अच्छा, मैं बहुत पर्सनली ले लेती हूँ। I think. पता है वो होता नहीं है because everything is personal when it's your partner. But then you have to understand that you have to learn to disengage and somewhere let go and choose your battles. And somewhere let him win and choose your battle. And इस battle में मैं नहीं हार सकती. So then somewhere I win, somewhere he wins. मैंने कहा it's an act of balancing. Like marriage is a balancing act. Really? So like disengage हो जाए बंदा, जवाब ना दे, बिल्कुल चुप हो जाए। हाँ वो और कभी-कभार That's just a means of expression. The whole point. देखो सिर्फ जवाब देने से मसला हल नहीं होता। अगर तुमने अपने दिल के अंदर लेके बैठे रहे हो बात और कुछ 6 महीने बाद वो और अजदा बन के निकलेगा तो उसका भी खूब है। So आहिस्ता मैंने तो रियलाइज किया one has to resolve it. yeah. And one resolves it by realizing how. Later by the way, उस टाइम पे अगर because दोनों heated parties हुई है ना, उस टाइम पे आप कुछ भी कर लें conclusion तो नहीं मिलेगा। तो उस टाइम पे आप अलग-अलग हो जाए। कर देगा तो दूसरे के पास ऑप्शन नहीं होगी। ये अच्छा है। For instance, sometimes like I tell him, okay, who's going for a drive? Are you going for a drive or should I leave? तो फिर हम ड्राइव करके आ जाते हैं और कभी-कभार ये जाता है कि कभी मैं जाती हूँ और लिटरली ये भी होता है कि फड्डा चल रहा है, और जोर से चीखो पुकार, फिर एक बंदा चुप करके बाहर निकल जाता है और वो दूसरा बोले जा रहा सुन सब निकल जाओ। So हाँ हम अलग हो जाते हैं. By the time the other party comes back, it's much settled. फिर आप 1-2 दिन बाद दोबारा redress करें situation को when you're much more calmer. You by that time दोनों parties अपने point of view बोल चुकी हैं. Most of the time the extreme गुस्सा that happens
it's just because you've given yourself the license to do it. Yeah. As simple. मतलब उससे ज़्यादा मुझे कोई और justify And- मतलब या तो मैं कहूँ ना कोई बड़ा कोई दुनिया को मतलब ऐसे कोई इंसाफ और जुल्म और मतलब कोई इतना इसके जिहाद होना कि किसी के साथ बहुत ज्यादती हो रही है जिंदगी में किसी थर्ड पार्टी के साथ या छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा स्केल अप करना ह्यूमन टेंडेंसी नेचुरल है फॉर ह्यूमन बीइंग्स टू डू इट बट if you recognize it then you realize how trite it is, how stupid it is to get into a fight. I've learned to disengage and so has he कि हम I realize was करते हैं never कि much अलग of a अलग fighter to start with. She is a fighter. And fighter. and at the same time देखो अगर इसके मेकअप में है to be that person, she cannot deny herself being that person either because that will be also not being herself. So she has to do it, and if she doesn't do it, then it will be a problem also. I'm just like हौले हो जाओ नफीसा हौले हौले हो जाओ. हौले हो Is this जाओ. the word that you use? हौले हो जाओ. हौले हो जाओ नफीसा हौले आजकल मैंने नया हरबा इस्तेमाल जैसी कुछ ऐसी चीज़ होती है मेरे पे गहरी सांस लेता हूँ गाना गाता हूँ निकल और नहीं then he also comes to me and he goes नफीसा बस देखो just change your tone. Sometimes you just have to change your tone of talking and it really helps. And he'll just come and he'll remind me. He goes, Nafisa, you know, tone तुम्हारी मुझे बग कर रही है बस थोड़ी सी tone हौली कर लो and we'll talk about it. We'll get there. And then I realize हाँ ये ज़रा ऊँची होगी और मतलब थोड़ी सी नीचे धीमी होती हूँ और फिर मैं दोबारा आती हूँ like आधे पौने घंटे में disengage करके दोबारा clear your mind and come back and then restart the conversation with a different tone. Speaking of this, what is that one modern marriage concept that really bugs you and that you don't agree with at all? कि compromise मैं तो कहती हूँ कि compromise मैं बिल्कुल agree नहीं करती I do not compromise believe पे in compromise. Both of you are aligned on that? नहीं Yeah. भाई be No true to such yourself thing as compromise. हाँ If you're doing something, especially in a relationship, I prefer the word sacrifice because you've done it and you've let go. हाँ You have to when you've done something उसका हिसाब किताब रखेंगे ना तो फिर बाद में जाके फिर शुरू हो जाएगा हिसाब किताब फिर आपने दिल में रखे हुए प्लान अगर आपने कुछ दिया है तो फिर दिल खोल के तो फिर उसका हिसाब ना मांगो ये रिश्तों के लिए जो मतलब करीबी रिश्ते होते हैं आई थिंक उसके अंदर बहुत मैटर करता है Compromise. कॉम्प्रोमाइज हिसाब में। हाँ मतलब अगर आपकी ज़ात के साथ एक जंग चल रही है आप कॉम्प्रोमाइज़ करें जैसे हम सुनते थे कि नो मैरिज इज़ ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइजिंग आई फील कॉम्प्रोमाइज जब आप कहते हैं ना तो वो तो इट्स ऑल अबाउट compromise- बैलेंसिंग फाइंड अ नाइस बैलेंस वेयर बोथ द पार्टीज आर एट ईज विद ईच अदर एंड दे कैन लिव विद इट ये नहीं हो सकता कि एक कॉम्प्रोमाइज़ ऐसे हो जाए कि एक पार्टी बिल्कुल बेचारी थल्ले लग गई है वो बिल्कुल डेवस्टेट हो रही है और दूसरी पार्टी कह रही है कि बस मैं तो समझता हूँ वो भी कर लो एज लॉन्ग एज यू रिजॉल्व्ड अबाउट इट अपने Yeah, अंदर if you वो can- लेके आपने बाहर नहीं इफ़ यू कैन पुल थ्रू दैट्स व्हाई आई बिलीव इन सैक्रिफाइस मोर देन कॉम्प्रोमाइज बिकॉज सैक्रिफाइस का मतलब मेरे लिए होता है कि आपने दिल से किया कॉम्प्रोमाइज का मतलब है कि आपने लेके रखा हुआ है दिल पे वो मैं I really like how he brought distinction between two very Yeah. closely associated words. या तो अगर बिकॉज करना होता है समटाइम्स यू हैव टू लेट गो ऑफ योर व्हाट इज चलो मैंने एक सेकंड बलिदान दिया तुम्हारे लिए compromise. Yeah. मतलब ठीक है अगर है उसकी और तो ठीक जताएं है। भी ना बार मियां बार बीवी के अंदर हम ज्यादा जता सकते हैं बिकॉज इट्स दैट हाँ। काइंड ऑफ रिलेशनशिप जहाँ पे आप छेड़खानी करते हैं अच्छा। एक दूसरे के साथ Casually कहती जिता दो हैं. कभी कभार बट दैट्स समथिंग दैट इवन दैट वी हैव स्टॉप्ड डूइंग नाउ या अबाउट इट मतलब हम जताते भी नहीं है ज़्यादा और हाँ हर्ट होते हैं कभी कभार कभी ये हर्ट होता है इसकी बारी होती है कभी मेरी बारी होती है बट वी लर्न एक्ट ऑफ लेटिंग गो भी शुरू कर दिया हमने अब हम कहते हैं यार यू नो द बिगर पिक्चर जस्ट कीप द बिगर पिक्चर इन माइंड एंड द बिगर पिक्चर इज बीइंग हैप्पी को एग्जिस्टिंग विद ईच अदर हैप्पीली and literally just and being true to yourself at the same time so 13 years of marriage, and I know there's no formula to it. Like everybody in the search of like a secret formula to it. How do you keep the flame alive? ये बहुत ही contested, बहुत ही popular question होता है. आप couple से पूछते हो कि यार, I mean, how have you done it? And अगर कोई formula है तो क्या है? Formula तो वैसे नहीं है, but what is it about it? देखो यार एक 5 उंगलियां है ना 5 उंगलियां साथ होती हैं तो फिर काम होता है हर उंगली एक जैसी नहीं होती and that is the beauty of nature that's the beauty of any relationship and in fact हम दोनों बिल्कुल opposite हैं हाँ बिल्कुल ऑपोजिट है बिल्कुल opposite background Likes and dislikes भी हमारे अलग हैं। का होना
हमारे इर्द गिर्द लोगों वही के बहुत लिए miracle एक है। shock अच्छा वो था। क्या adage होता है कि you know like opposites attract and then they attack? Is that true? There's any Of truth course. in Yeah, And yeah. I think Exactly that सही कह रही हो. is- Then they attack also. But I think that's the beauty of life. That's the beauty of nature. If you were just having all sugar, and very just like lovey-dovey, what would be the fun of that relation? What would be the how real would that relationship be? A relationship of such a length. आप अपने माँ बाप के साथ लड़ाई झगड़े करते हैं, अपने सिबलिंग्स के साथ करते हैं यार, ये उतनी ही इंटेंसिटी का रिश्ता है, और बल्कि देर से शुरू होता है ज़िंदगी में तो ज़्यादा मुश्किल होता है. You know, it's a bigger kind of a test, if I can say. It's not, मतलब sustaining a marriage is not an easy task. You have to work on it. Yeah, it's It just constant can't work. happen by you being the person that you are and not caring about. And being fixed. And being But- fixed. You can't even be fixed. So there are 2-3 models that we end up. One is that you try to not be the person that you are and you support the other person, or you just figure out that we both have to take these little steps to help the other become better in what they are with the makeup that they are. As simple as that. And I think that is what cracked for me. हम दोनों celebrate करते हैं एक दूसरे की independence. Oh my God! Like, mashallah, we the do. way you said it. Yeah. We believe in each other's independence. Yeah. Like I think that's what makes us stronger together when we let each other be the best version of themselves. Yeah. He empowers me, I empower him. Yeah. Like they're like मैंने ये नहीं करना. क्यों नहीं करना? Go do it यार. Like नहीं मेरे comfort zone में नहीं है. क्या करके तो जाके देख के आओ ना. And he does the same for me. And I'll be like, yeah, nahi, I don't want to go here alone. Initially, like, I would not want to go out alone without him. And I'd be like, nahi, we'll do it together. Nahi, tum jao, akele jao. खुद की भी कुछ independence होती है. Yeah, and he's pushed me, and now I'm like, I love this independence. हम थोड़े से इस मामले में लकी भी हैं कि हम दोनों सबसे छोटे हैं अपनी फैमिली में. हाँ. उसकी वजह से हमें इंडिपेंडेंस वैसी मिली एट वन. हाँ. सो उसको हमने मतलब आपको एक बिल्कुल एक वो होता है ना, बेपरवाही सी आती है, बिकॉज आपके इर्द गिर्द होते हैं जो जिम्मेदारियाँ उठा सकते हैं. Yeah. सो दैट उसकी वजह से आई थिंक हमने भी देर से आराम से अपना टाइम लेके सारी जिम्मेदारी Yeah, बड़े slow pace पे किया हमने. अपनी बेसिक पेस पे. Our families But know. maybe that's something that also bound us, like kept us Yeah, together, because yeah. we both kept our laid back attitude to life also intact, and I said ठीक है अच्छा यार तू. I guess that kind of helped also. कि pressure नहीं डालते थे किसी को, unnecessary pressure नहीं आता था कि यार टाइम निकल रहा है जल्दी करो ये करके देखा होगा. लड़ाइयाँ होती हैं उस पर, लेकिन जब मैं प्रेशर डालता हूँ तो ये मुझसे लड़ लेती है. फिर what we eventually realize कि इस टाइप के प्रेशर नहीं डालते. नहीं. Just let everything will happen at its time. Time. And it usually happens for the better when it happens that, you know. Fantastic. Both of you like very. I think this is the best question and the best answer that I got so far. And we'll end this interview. You will sing a song for Nafisa, straight from the heart. Hi. वैसे तो आपको मिलते होंगे concerts यार. Like how lucky you are वैसे. तुम देखो पहचानो, Oh, I need to record this. समझो मेरी जान, ये राहें हैं प्यार की परखों मेरी जान. परख रही हूँ सर, परख रही हूँ. Lovely both of you. Mashallah. Thank you, Tia.